सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का रिवीजन। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टी सी इसका डेल्टा स्क्वायर यू डेल्टा स्क्वायर पैराबोलिक इक्वेशन। sec x को हम ऐसे ही लिख सकते हैं sec i पर x को 2 x प्लस sec i पर हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x माइनस ये इक्वेशन से डेल स्क्वायर बाय डेल टी लगा दो काफी बड़ी इक्वेशन भी इलेक्ट्रिकल इक्वेशन होती है ए बी 2 आई ए बी प्लस 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर एच पाई ए बी एच sec x का एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स 24 5 log sec x को x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स पावर 6 डिवाइड log 1 प्लस एक्स एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स बाय 3 sin x x by 6 minus 3x power 5 divided by e power 10x 1 plus x square by 2 plus x over 3 mutually exclusive p a intersection b is equal to 0 independent b is equal to b a b f into f0 x 2 f dash 0 that is equal to local dash 0 x into y sin x dy upon dx is equal to under root 10 by 2 sin a plus b sin a plus b plus n factorial is equal to n ln n minus 2 factorial is equal to pi 1 by 2 factorial is equal to under pi by 2 diffusion equation is dash का exactly one of A and B. A intersection B below exactly the equation of line surface here and consider arsenic definition on follow here मतलब post meridian A मतलब होगा 6 बजे से morning से noon x minus a is as a minus the l x minus b x minus 2 0 0 0
y is equal to 1y is equal to x square, y is equal to x square, sin x, sin 2x, sin 3x, y is equal to b, y is equal to x square, y is equal to y is equal to a plus b is equal to x, y is equal to x, e diverging equivalent एक मिलियन 10 लाख कैंसर पावर 6 we dot b is equal to we dot a plus b is equal to b plus a minus a plus a plus b is equal to 0 r is equal to vector r is equal to divergence of r is equal to 0 gradient r vector divided r vectors del r l r 0 0 del g del g del gradient of delta phi times dot curl by divergence to 0 curl gradient to 0 divergence by del phi divergence b plus del phi b divergence of phi of beta phi divergence of del phi b curl gradient of gradient of phi curl of phi b vector phi curl v plus del phi b 1 1 क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेंस होती है माइनस का 1 बाय आर डेल्टा और वेक्टर दो बार यदि रहे तो एन एन प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर आर इक्वल टू डबल डबल for integration plus 2 by r f of r divergence of r vector so divergence of r vector square is equal to 0 curl r square is equal to 0 a vector is equal to p r की power a vector is equal to p r की power n r a r की power n r r r vector r n minus 1 r Green theorem out here Green theorem surface integral dx plus n dy is equal to del n minus del n
equation of curve y is equal to dy dx निकाल लेंगे और उसके बाद y माइनस वन एफ डी आर इसको लेंथ ऑफ आर डी एक्स डी और उसका अंडर रूट dy अपॉन डी टी का होगा उसका एरिया ऑफ कर्व वाई डी एक्स इन द फॉर्म ऑफ आर डी वाई डी एक्स एरिया वॉल्यूम पाई वाई स्क्वायर डी एक्स पाई वाई स्क्वायर डी एक्स वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रेवोल्यूशन 2 pi t 2 pi y dx dy volume of solid revolution at solid revolution 2 pi x dx dy circulation FDR if respect to FDR is equal to 0 orthogonal delta phi 1 dot delta phi 2 is equal to 0 Stokes theorem line and surface के बीच में रिलेशन करती है FDR is equal to curl F into M unit vector ds FDR F del cos F and ds and ds then is equal to del pi 1 FDR is equal to 0 del pi FDR is equal to 0 curl and is an octave at any point say xy is given by y minus y dy x minus y 0 what divergence cos divergence FDX surface FDX FDX del FDX FDX grade phi m ds f ds phi s f gradient phi 2xi is 2yz float set की 2 2 4 float surface sphere cube cylinder cube cylinder del divergence Gauss divergence theorem find volume integral del t closed curve 2D Green theorem dx plus n dy ln x and dx theorem closed curve on open surface particular and sphere Stokes theorem line and surface line और surface इंटीग्रल में बताता है f ds to curl f and ds n क्या होता है d del phi का mod f ये सब 0 होते हैं ऐसे length of curl x upon del t का होल स्क्वायर del t का होल स्क्वायर del z area of curve by dx area dx by d volume of curve pi y square dx 2 pi by dx dy 2 pi x dx by surface delta
delta phi delta phi dr er 1 by RT phi volume of plane a q by 6 प्लेन का वॉल्यूम a q by 6 होता है। डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है? ये होता है डाइवर्जेंस ऑफ डेरिवेटिव del phi multiply a vector phi spherical ये सब divergence of r3 del curl of r vector is equal to 0 curl of r vector is 0 divergence of r one vector is equal to 2 by r divergence of r की power n into r n क्या होता है n plus 3 r की power n curl r की power 0 d theta upon dt is equal to minus k theta 1 theta 3 law of rho x equal to c e की power dt y dy 1 upon x square for minus n and x 1 minus 1 by x cube 3 minus 2 ln x e की power I a की power cos 80 plus I sin 80 sin hyperbolic 80 को क्या लिख सकते हैं e की power 80 minus e की power minus 80 divided by 2 cos hyperbolic 80 is equal to e की power 80 plus e की power 80 divided by 2 Laplace LFT is equal to e की power 60 ft Laplace ft dt Laplace a upon s e की power 80 is equal to s minus a e की power minus 80 s plus a Laplace cos 80 is equal to s over s square plus a square sin 80 a upon a Laplace sin 80 sin hyperbolic 80 a upon s square minus a square Laplace cos hyperbolic 80 s upon s square minus a square Laplace t की power first shifting property Laplace t की power 80 ft is equal to f s minus a s minus a f s minus a e power 2t sin 2t 2 of s square 2 square s minus 2 the whole square Laplace f dash t is equal to s square minus Laplace t square t minus s f 0 with 0 Laplace f f plus q l t minus s square l 0 is l 0 l 0 okay l of scale plus f 80 1 by a f s f c t 1 by s 9 minus
multiplication p l to the power n ft minus 1 n d of l p sin t minus a 1 1 d of ps plus divided Laplace t is equal to cos kt s plus a square q divided by t l f t t Laplace ds sin at a upon l square plus a square Laplace 1 minus cos 2t divided by t 1 by 2 log s square plus s 4 Laplace by t dA fs में सकते हो y बाय s सकते हो Laplace by अपन क्या यूज करें दोस्तों अपन यहाँ यूज करेंगे एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डी जीरो ये यूज करेंगे टू साइन कॉस बी इक्वल टू साइन प्लस साइन ए माइनस बी error method में minimum iteration bisection method x 0 plus 1 by 2 ये आएगा b minus a जो आएगा n equal to e regular partial method x2 is equal to x0 fx1 minus x1 fx0 fx1 minus fx0 second method x0 minus x1 x1 minus x0 fx1 minus fx0 Newton Raphson method x1 minus fx f dash x Euler method dy upon dx is equal to fx dy dx is equal to fx x is equal to x0 y is equal to y0 yn is equal to y y1 is equal to y0 plus h x0 y0 h cancel v minus a divided by n Lagrangian method f dash c is equal to fb minus fa divided by b minus a Rolle's method f dash c is equal to 0 और कर देना Laplace of ft 1 upon su 1 minus e की पावर su यदि रहे फंक्शन जो है 1 by a रहे यूनिट स्टेप फंक्शन u t minus u a is equal to 1 Laplace of 1 minus u e की पावर ऐसा है यूनिट स्टेप फंक्शन रहे Laplace u t minus e की पावर minus a divided s periodic फंक्शन रहे तो क्या करेंगे 1 अपॉन e की पावर माइनस e एस टी टी 0 से t एफ टी e पावर एस टी इंटीग्रेशन के अंदर यूनिट इम्पल्स फंक्शन रहे तो या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन रहे तो डेल्टा टी माइनस ए 1 अपॉन एक्सलॉन से टू प्लस e की पावर माइनस एस ए एस डायरेक्ट area of rectangle delta t minus att is equal to 1 direct delta function की ft dt dtu minus u sorry a dt is equal to fa e की power minus as
minus AL fx. Poisson distribution. Poisson distribution mu is equal to Ex lambda. Variance sigma square is equal to Ex minus U का whole square is equal to lambda. Exponential 1 by lambda, lambda square, exponential normal, यूनिफॉर्म। ये तीनों एक प्रकार के होते हैं। बाइनोमियल और पॉइसन प्रकार के होते हैं। 1 बाय लैम्डा, 1 बाय लैम्डा म्यू, म्यू स्क्वायर पी प्लस ए बटे 2 पी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ए का होल स्क्वायर बाइनोमियल एन पी, एन पी क्यू अंडर रूट एन पी क्यू लैम्डा distribution exponential f is equal to lambda e की power lambda x, mean 1 by lambda, standard deviation 1 by lambda, variance 1 by lambda square, variance standard deviation का square fx sigma under root pi under root 2 pi sigma under root 2 upon pi 0.8 sigma z x minus mu divided by sigma mu mu variance sigma square is equal to mu square plus minus sigma 0.6.8 minus 2.6 plus minus 2 sigma 95.45 44% plus minus 3 sigma 99.73 यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म में एफ एक्स होता है वी माइनस ए होता है मीन वी प्लस ए बटे दो वेरियंस वी माइनस ए का होल स्क्वायर बटे दो है बाइनोमियल एन सी आर आर क्यूब एन माइनस आर मीन एन पी वेरियंस एन पी क्यू स्टैंडर्ड डिविएशन एन पी क्यू का ब्रैकेट रूट पॉइजन पी आर इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा माइनस का लैम्डा lambda की पावर आर आर occurrence in inter interval interval when lambda is the number of every at occurrence at an interval lambda variance is equal to lambda standard deviation under root sigma under root lambda probability 0 e की पावर माइनस 1 lambda की पावर 0 to 1 e1 e की पावर minus 1 e की पावर 1 1 expectation ex is equal to summation of x standard deviation e summation of x square p minus ex variance e की power x square minus e की power x square standard deviation sigma is equal to under y is equal to ax y is equal to a plus a1 mean a mu plus v a1 mu1 plus minus a2 mu2 variance a square into में सिग्मा स्क्वायर यहाँ वेरिएंस क्या आएगा a1 का स्क्वायर सिग्मा 1 का स्क्वायर लेकिन यहाँ पर प्लस ही लगेगा फंक्शन एफ एक्स एक्स स्क्वायर 2x plus 3y2 और 0x minus x से 1 if y random variable such that y is equal to 3 divided by x plus 4 vy vx plus 3 plus x plus 4 variance Ex a square bx va is equal to 0 y is equal to 2 on x dy vy is equal to b
1y(x) plus 2 1y(x) square g e upon x square minus e upon 1y(x) whole square e 1y(x) 1y(x) fx 1y(x) x square 2x plus 3y2 2x cube plus 3x square y2 is equal to dy dash ex ex 1y(x) square 1y(x) square plus dx 1y(x) square x square 2x plus 3 dx 2x cube plus 3xy2 इसको टू 5y2 हो जाएगा y से ये निकल जाएगा। ये न्यूटन ऑप्शन मेथड लिखी है एच बी माइनस ए मेट्रिक तो एफ मेथड एफ एक्स यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं, ये याद रखना। ट्रेपेजोइडल एच बाई टू सिंप्लेक्स वन थर्ड एच बाई थ्री वाई एट एच वाई जीरो बाई वन यहाँ पर दो और मल्टीप्लाई में पूरा 1 4 2 ये आ जाएगा 1 4 2 3 और 2 3 वाले में अपने और नंबर के प्रोडक्ट रहेंगे तो इसमें 3 को छोड़ के सारे प्रोडक्ट ये 3 और इसको छोड़ के इसमें 3 की मल्टीप्लिकेशन हमारे को प्रोडक्ट देंगे। ट्रापेजोइडल फर्स्ट ऑर्डर है, वन थर्ड सेकेंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है। इसमें एच स्क्वायर इसमें एच की पावर 4 इसमें एच की पावर 5 यूलर मेथड का एक और न्यूमेरिकल हम करें ये है बैक और वर्ड यूलर वाई एन प्लस वन वाई एन वही है यार रेगुलर पॉलिसी में हमको ये याद रखना है कि K1 K2 K3 K1 और K2 तो बहुत इजी है एच एफ एक्स 0 वाई 0 K2 एच एफ एक्स 0 प्लस एच वाई 0 प्लस के वाई 0 प्लस के K1 प्लस K2 y1 क्या होगा y0 प्लस के प्लस K2 ओके K1 की वैल्यू ऐसे निकालना K2 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे K3 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे और K4 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। यदि 2 वाला रहे और यदि 4 वाला रहे ऐसे फिर 1/6 2K2 प्लस K3 2 प्लस K4 इसी करके पूरा निकाल लेंगे cot स्क्वायर t माइनस cot cos 6t 1/2 5/2 r 0 से छोटे लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू आर टी माइनस एस स्क्वायर मैक्सिमम और मिनिमम आर टी माइनस एस स्क्वायर सैडल पॉइंट एफ आर डी आर लिमिट एफ एक्स डी एक्स conversion if the limit of above integral exists convergent if the limit above integral exists or finite then the integral is said to be inconvergent divergent if the limit do not exist then they said to be divergent b square minus 4ac 0 elliptical parabolic elliptical hyperbolic parent function property of reduced integer function x and m x and x 0 greatest integer function property Laplace of ft is equal to e की 0 से infinite e की power ft ft dt fs Laplace of periodic function 1/s e की power t ft 0 से 2 pi से pi उसके बाद e की पावर 2x a स्क्वायर
इसमें बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो तो इसको यूनिट स्टेप फंक्शन Laplace of u t minus a is equal to e की power minus a x limit sin x upon x is equal to 0 L inverse Laplace L inverse 2 by s e की power at e की power at divided power e की power 2 factorial e की power n minus 1 divided by factorial cos at cos hyperbolic as square root a square e की power 1 by a sin at 1 by a sin hyperbolic t e की 1 by e की power bt sin bt e की power 8t cos bt 1 by 2 sin bt sin bt by 2 sin t by 2 sin bt L inverse s square plus a square by 80 minus 80 cos 80 t की power minus 1 by 2 L t की power 2s under root 5 बटे s under root 5 बटे s t f t L minus का d upon ds log s square s square f L inverse t f t L inverse 2 बटे s 2s t is equal to minus cos t 2s s minus 1 s minus 2 t upon s minus you can see 2 minus 2 2 t 2 cos t divided d upon dx tan x sec square x u v u dash v dash v dash dx upon v square sec square x sec x cosine also sec x tan x cos theta sec cot x cot x minus cos square x sin inverse x 1 divided by 1 under root 1 minus x square cos inverse x का mod x under root x square minus 1 sin x a की power n sin x एक बस आ रहा है e की power ax sin bx a square plus b square n by 2 e की power ax e की power ax sin bx and tan inverse बहन चोद क्या लिखा है वे फॉर्मूले y dx minus x dy square dxy इक्वेशन 1 है इक्वेशन 2 है इससे अपन ये वाला इक्वेशन a x minus 1 y minus z minus इसी प्रकार नीचे वाले पॉइंट से एक एक यदि a प्लस b उसके बाद a और b और c की वैल्यू निकालेंगे सुबह कर देंगे और से निकाल देंगे साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 by 1 minus cos 2x sin cube x इक्वल टू 3 sin x minus sin 3x बटे 4 d sin x sin 3x 4 cos 3x इक्वल टू 4 cos cube minus 3 sin x इक्वल टू 4 उसको sin 3x फिर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं डाया ऑफ सर्कल a अपॉन sin a अपॉन sin c sin c cos a
UVDX is IDX is IDX. ये वाला फॉर्मूला 1 से यदि आंसर है तो x मल्टीप्लाई 10x log sec x plus c sec square sec x log sec x 10x plus c log 10 pi by 4 x by 2 1 upon x square 1 by 2 log x minus a log x plus a x minus a x plus a under root x a square minus x square x under root a square plus x square by 2 a square by 2 sin inverse x by a plus c under root a square plus x square x under root a square minus x square by 2 a square by 2 sin inverse hyperbolic x c log x x log x minus 1 under root 16 minus x square x under root 16 minus x square by 2 16 over 10 sin inverse x by 2 plus the c under root 9 minus 9 plus x square x under root 9 minus x square by 2 9 by 2 sin x by 3 c sin 6 theta plus theta 4 minus plus theta 1 gamma 1 by 2 gamma 1 plus 1 is to 2 gamma 1 into 2 beta function x power n x n minus 1 dx is equal to beta m n sin m n 0 से pi by sin cos cube d theta b plus 1 2 plus 2 plus cube by 2 under root 1 minus b pi sin px 0 0 से 1 root 1 minus x power 6 root 2 pi 9 plus 1 and under root n under root 3 by 2 by 2 a square minus x square a square minus x square x a sin theta x cos theta square plus a square dot x sin theta a sin theta x square Newton bisection slow conservative 1 closed also slow conservative 1 2 closed second button medium कन्वर्जन जो है 1.21 फास्ट होती है 2 से हार्मोनिक डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स डेल्टा स्क्वायर डेल्टा एक्स ऑर्थोगोनल m1 minus m1 derive upon the x derive upon the formation m function of z 2u z upon 2 z upon 2y is f0 यदि भी दिया काला del p del x dx del minus del x del dx del dy check by the its use critical step by meter by sine meter sine on e power z by the z z square to 11
Z to the power 3 Z to the power 4 to the VR. Vx minus Uy. VR 1 by R. A theta by VR theta. It's R cos theta plus I sin theta. R phi theta. E I y plus y I sin y. E minus I y minus I sin y. Z e to the power I z e to the power I z tan z sin z cos z cos z I as sin z e to the power I z e to the power I z cos y plus I sin y here I cos theta plus I sin theta sin ix I sin hyperbolic cos ix cos hyperbolic tan ix I tan sin I sin x cos x tan hyperbolic ix I tan x log x plus I y to ln y to ln y to log x plus I y ln x square plus y square plus I 2 pi x plus tan inverse y alpha plus iv alpha plus iv is equal to x plus iy e की power a cos b plus I sin b यही होता है a is equal to ये होता है is equal to point similarity limit z minus a f z remember similarity f z senses limit f z exists in finite time as 4 of a. The order of pole is 7 is the number of negative power in terms of series expansion. If consecutive, then A diagonal is equal to 0. A is analytic, then Z is equal to 0. Z is equal to U, Z is equal to 0. But Z is equal to substantially large. Fourier series, any periodic signal can be represented by a set of units. An exponential signal avoid provided it satisfies this boundary condition. Exponential signal e की power I theta is equal to exponent sin theta cos theta to the and this is boundary condition for the necessary and sufficient condition. Fourier series f(x) is periodic function finite value at alpha plus 2 beta f(x) may have finite number of dis- discontinuous discontinuities. Fx may have finite number of maximum and minimum. F fx is a periodic function with period 2L. Fs expansion in an interval fx ay2 an cos n phi n to a0 an bn called Fourier series of coefficient a0 a0 1 by l an 1 by l minus l f dx dx cos l by x. It's an odd even cos odd even sin 1 even sin 1 फिर आया कौन सा ये शॉर्टकट होती है इंटीग्रेशन की एक्स हाँ एक्स यदि रहे तो उसकी पूरी सीरीज लिखने के लिए ए एन अपन निकालिए कुछ इस प्रकार से ए एन ए से निकालिए ए निकालिए एक्स
on cos n x dx 2y plus x sin x minus 1 cos n x divided n square 2 बटे पाई cos n x निकाल लेंगे an 0 if n is equal to even और यदि n is odd then ये fx fx निकालना है ऐसे पूरे से निकालना एक्स स्क्वायर इवन है इसीलिए bn का वैल्यू 0 हो जाएगा fx a0 निकालेंगे ये आया an निकालेंगे ये आया an एक्स स्क्वायर कॉस एन एक्स को हम इस प्रकार लिखेंगे पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे उसके नीचे कॉस को लिखेंगे डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर 2x 2 0 कॉस एन एक्स का अपन सिंपल इंटीग्रेशन करते जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में और फिर एक में प्लस लगा देंगे एक में माइनस लगा देंगे एक में माइनस लगा देंगे प्लस लगा देंगे और ए एन की वैल्यू निकाल के ए एन निकाल लेंगे और उसको पूरी सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये आया कुछ भी हो हमको वही लिखना आगे a0 ऐसे निकालेंगे ये निकल गया ये निकल गया उसके बाद आता है कोरिलेशन कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कोवेरिएंस ई एक्स वाई माइनस म्यू एक्स म्यू वाई ये होता है कोवेरिएंस कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पाइपलाइन ये होगा 3.2 होगा कोवेरिएंस ऑफ बोथ का मीन ये है एक्सपोनेंशियल यदि वो हो रहा तो डायरेक्ट 1/λ होता है वेरिएंस निकाल दो 1/λ स्क्वायर ई एक्स लैम्डा स्क्वायर वे को वेरिएंस होता है 1/x कोवेरिएंस 2 टाइम कोवेरिएंस निकालने के लिए क्या होगा -1/2 कोरिलेशन कोरिलेशन कोवेरिएंस डिवाइड सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आर माइनस का 0 माइनस का आर निकल गया ओके कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस the CV standard deviation by x bar numerical stability 1 minus pi h इसके दोनों तरफ -1 2 2 0 by 2 दो तीन प्रकार के हैं उस प्लस डी एक्स वाई डी वाई एक्स ln एक्स वाई ये तो छोड़ दो हार्मोनिक कॉन्जुगेटेड और लैप्लासियन डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल टू 0 डेल्टा स्क्वायर यू इक्वल टू 0 m is equal to u minus v m is equal to n plus v analytic dv फॉर्मूला मिल जाए तो हम सब मेथड से भी निकाल सकते हैं लेकिन अपन को यही यूज करना है v is equal to माइनस का u y dx इससे निकाल रहे हैं 2u z by 2 माइनस 2 into 0 इससे भी निकाल दो इसी से भी निकाल सबसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली a और b occur probability a union b minus probability a intersection b probability of a given that b denote probability a बटे b ये a intersection b probability of b given that ये probability a intersection b dash ये हो जाए probability of getting at least 3 guys 5 or 6 ये हो जाएगा ये आता है फर्स्ट 6 देन सक्सेस 1 p q
multiply 1 minus a upon square at least 1 will be a plus 2 plus a exactly 1 of a occur in a intersection a intersection a union of b intersection neither a nor b a 1 minus a union b only a not b b b में से e a intersection b हाइपरबोलिक फंक्शन साइन हाइपरबोलिक माइनस साइन है ये यही होगा डाइवर्जेंस ऑफ फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई ए प्लस फाई डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर 3 ग्रेडियंट ऑफ आर की पावर एन आर की माइनस वन वही पूरा डिफरेंशिएशन वाला और पीछे आर वेक्टर जोड़ दिया करो और कुछ नहीं ग्रेडियंट ऑफ फाई पूरा वही है पूरा पूरा सिंपल 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 डेल्टा एफ आर एफ डेल आर 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 वही 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 सिंपल डिफरेंशिएशन ही करना है और कुछ भी नहीं करना है इन सब चीज़ों में रेसिड्यू रेसिड्यू निकाल के देख लो एक बार उसके बाद आ जाएगा कॉम्प्लेक्स फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन में साइन जेड का ये सीरीज याद कर लो जेड अपॉन जेड और स्क्वायर जेड रेसिड्यू निकालना रहेगा e power z plus 1 is equal to e power z is equal to minus 1 z is equal to minus का प्लस का आई आई एफ जेड कॉम्प्लेक्स डायगोनल इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल लाइन जेड स्क्वायर डी जेड is equal to 1 by 3 जेड क्यूब 1 जेड 1 प्लस आई का क्यूब cos जेड साइन जेड 2 सिंप्लीफिकेशन रेसिड्यू निकालने के लिए रेसिड्यू होता है वही होता है अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर अभी के लिए इतना ही रेसिड्यू पार्ट में निकालने के लिए सिंपल ये निकालेंगे और कुछ नहीं करेंगे कॉची थ्योरम यही है उसके बाद ना जो है दो फंक्शन में है एनालिटिक है 2 मिनट बचे हुए ठीक है तो ये वाला ये देते हैं एम जेड क्या होता है यू डी एक्स माइनस वी डी वाई प्लस आई वी डी एक्स प्लस यू डी वाई एफ जेड इज एनालिटिक देन एफ डैश जेड इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट एंड ए इज क्लोज्ड कर्व सी एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 कॉची इंटीग्रल थ्योरम ट्रांसफॉर्म एफ ए 1/2 पाई एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं आर की पावर आई थीटा डी जेड को हम क्या लिख सकते हैं ये यदि एफ ए रहे तो एन फैक्टोरियल डिवाइड में 2 पाई आई एफ जेड जेड माइनस एन प्लस 1 जेड series of complex term Taylor series if fz is analytic inside the circle fz is equal to f a f dash a z minus a ये Lorentz series fz analytic is in the ring shaped region and bounded by concentric circle radius r r1 r2 ए ए1 ए2 एफ जेड ए एन इसका टू क्या होगा 1/2 पाई एफ टी टी माइनस ए का एन प्लस वन डी टी सेट अनंत यदि खेल रहे हैं सेट आने की प्रोबेबिलिटी जीतने की प्रोबेबिलिटी पी अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर पी अपॉन 1 माइनस क्यू स्क्वायर 2/3